अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 2 डे 1 स्टूडेंट्स, आज हम एक सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, साइंस इज एन डैश प्रोसेस दैट पीपल यूज टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। स्टूडेंट, इसका आंसर है इंक्वायरी। नंबर 2, गुड ऑब्जर्वर रिलाई मेनली ऑन देयर सेंस ऑफ, इसका आंसर है साइट। Number 3, student need to be taught how to describe and record what they dash. Student, इसका आंसर है observe. Number 4, science is a search for dash. Reasoning, आंसर है इसका. Number 5, sorting and grouping activities should begin in dash. Student, इसका आंसर है kindergarten. Number 6, students should be encouraged to make dash and then seek to confirm और डिसकन्फर्म दैम। स्टूडेंट, इसका आंसर है नंबर 6 का आंसर है इंक्वायरी। नंबर 6 का आंसर है सर्च प्रेडिक्शन। नंबर 7, द एबिलिटी टू लोकेट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन इंसाइक्लोपीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट डैश स्किल। मीन्स इसका आंसर है इंक्वायरी स्किल। नंबर 8, चिल्ड्रन आर बोर्न डैश, आंसर है साइंटिस्ट। 9, dash depends upon the collection, evaluation and interpretation of evidence. Students, इसका आंसर है science. Question number 2, tick for true and cross for false statement. Number 1, student who understand a principle should not be able to explain it in their own words. Student, इसका आंसर है false. Number 2, students should be not always be given problem that are already structured and defined. स्टूडेंट, इसका आंसर है ट्रू. नंबर 3, साइंस कोर करिकुलम शुड बी प्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ वोकेबलरी लेसन्स. स्टूडेंट, नंबर 3 का आंसर भी है फॉल्स. स्टूडेंट्स नॉलेज शुड नॉट बी असेस्ड मेयरली इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन अ वोकेबलरी टेस्ट. स्टूडेंट, इसका आंसर है फॉल्स. नंबर 4 का आंसर भी है हमारे पास स्टूडेंट फॉल्स. नंबर 5 का आंसर है हमारे पास true. Number 6, common people understand the relationship among their aspects of science. Students, 6 भी हमारे पर true है. और number 7, science is an inductive process. इसका आंसर भी है हमारे पास true. Question number 3, tick the correct answer. Number 1, good observer use sense of, इसका आंसर है D, all of these, मतलब sight, listening, touch. Student, number 2, student need to be taught how to describe and record what they, इसका आंसर है observe, A. Number 3, an investigation that begins with inaccurate observation will likely lead to dash conclusion. स्टूडेंट, इसका आंसर है B. थर्ड का है B मीन्स हमारे पास इनवैलिड इन कंक्लूजन होती है. नंबर 4, डैश इज अ सर्च फॉर रीजनिंग, इसका आंसर है हमारे पास D, मतलब साइंस इज अ सर्च फॉर रीजनिंग. नंबर 5, sorting and grouping activities should begin in A, kindergarten. 6, science is different from other ways of learning and knowing on the basis of dash D, मतलब D आंसर है इसका. ऑल ऑफ दीज कलेक्शन, एवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये. डिफाइन साइंस. साइंस इज एन इंक्वायरी प्रोसेस दैट पीपल यूज टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग. आंसर है इसका यूजिंग वन और मोर ऑफ योर सेंसेस to gather information. Need to be taught how to use ruler, thermometers and other simple measuring devices. हमारे पास what is meant by sorting and classifying. Answer है students, person who do science attempt to organize their observation and make sense of out of them based on recognizable pattern, observed similarities and differences. Students, week 2 day 2. क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन इज स्टडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल इवेंट्स टू अकर इन अदर सिचुएशंस. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. हाउ इन्फॉर्मेशन इज लोकेटेड इन रेफरेंस सोर्सेज. एक्सप्लेन. द एबिलिटी टू लोकेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन हैंड बुक्स, encyclopedia, compact disc and other reference sources is another important inquiry skill which students have.
6 students, how children are born scientists. Explain. Like scientists, children are naturally curious. Most children are born with an ability to think. They have to learn how to think effectively. Question number 7. What is meant by scientific concepts and principle? Explain. Students should not always be given problems that are already structured or defined. Two important aspects of problem solving involve knowing how to define what the problem is and then deciding which solution is appropriate. Last question is student. Question number 8. Describe how Pasteur germ theory changed the previously accepted scientific truth. Answer is experiment of Pasteur. The theory of non-existing bacteria was completely replaced with the theory that bacteria exist, grow and can be controlled. This was called as germ theory.